When we talk about women's health, we often talk about sexual health. But women's health is way more than just sexual health. Everything that happens in your pants is not sexual. We will start with early periods and why they happen. Then we will help women choose the right menstrual hygiene products. Then we'll talk about the do's and don'ts around PCOS. And then we'll focus on what should women do when they are sexually active. And then we look at what contraceptives should they use once they are sexually active. Then we're going to focus on pregnancy with a mind on how they can increase their fertility and what are the best days for pregnancy. And lastly, we're going to focus on menopause. With us, we have Dr. Anjali Kumar, who's a senior gynecologist with more than 33 years of experience. She heads the gynecology department of CK Birla Hospital and is the founder of women's health platform Maitri. Welcome to this episode of Women's Health, and I'm very confident that this will be one of the most informative videos on women's health that you're going to ever watch. Before we begin, I want to thank Zerodha's Media Network 01, whose resources enable me to bring quality and valuable content like this to all of you. So first of all, as a guy, I want to say that I'm very embarrassed today to talk about women's health because I know very little about it. And I may ask you very stupid questions. And that's because I am very stupid about this topic. And मेरे को बहुत कम पता है about women's health. No worries. And to all the guys and girls as well and whoever else is watching today, come watch with me and learn with me because I also know little about this topic, so we can all learn together. So doctor, these are some of the most Googled questions around women's health. So I wanted to ask all of this to you. What exactly is a period? How to reduce pain during periods? What are the do's and don'ts around PCOS? Why is infertility rising? And what are the best days to get pregnant? The first question I want to ask you is literally, what exactly is a period? And probably guys have asked this, but this is one of the most Googled questions around period. So first of all, I'm very glad that you've used the term period because most of the times when I hear people, they say, oh, I'm down, oh, I'm chumming. You know, it seems as if people do not have the courage to use the word period. That's what is the stigma and the taboo around the word period. So let me explain today what is a period. So this is a simple model of a female reproductive system. That's the uterus. There are two tubes by the side. There are two ovaries. This is what is known as cervix. This is also known as mouth of uterus. This is vagina. And here is somewhere the outside vaginal opening which a woman sees in her body. So every month, the ovary starts to produce certain eggs. When a girl child is born, she's born with millions of eggs in her ovaries. And when she attains puberty, that's the time few eggs they start to develop. By puberty, these eggs they start to develop. Now, while they are developing, they produce a hormone called estrogen, which basically stimulates the inner lining of the uterus. Now, by the middle of the cycle, the tube sort of just picks up the egg like this, and now the egg travels into the tube. If around the same time, the sexual intercourse takes place, the sperm fertilizes the egg here, and now the fertilized egg reaches, and now this fertilized egg finds a nice bed ready for implantation, which has happened because of the hormones which were generated by the developing egg. But in case the pregnancy does not happen, this entire preparation goes waste and this lining is shed in form of periods. So period is nothing but the periodic shedding of the lining of the uterus, which happens because of the physiological changes which happen in the body. There is nothing dirty about it. There is nothing wrong with it. Unfortunately, even in today's world, women have to undergo so much while they're on periods. Doctor, the only time I've seen
like, a diagram like this was, in class 7 or like, in the school biology textbook. And that time, like I was in an all boys school, so it was very unfortunately sexualized a lot, and Yes. guys used to do all sorts of things with something like this. So doctor, one more thing, like where does like a female, sorry if I'm asking very, very basic No, question. I please may get go even ahead. trolled possibly on the internet for asking some of these questions. So where does a female like urinate from? Oh, so we need to understand a woman has got 3 openings down there. So one is the urethra, which is connected to the urinary tract. Then is the vagina, and then behind there is the anus and the rectum and Yeah. everything. So there is a urinary tract in the front, then there is vagina in middle, and behind we have the rectum. So this is entirely different from this, and this is entirely different from this. So there are 3 different tracks in a woman's body. Okay. Interesting. एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है. I get a lot of questions from mothers and sometimes even fathers कि आजकल इतना early periods क्यों हो रहा है? Like 7-8 years में ही daughters लोग को periods होने लग गया. ऐसा क्यों हो रहा है? या ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है. इनफैक्ट हम लोग अपने भी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे एक बार कि माई ग्रैंड मदर हैड हर फर्स्ट पीरियड व्हेन शी वाज 17. My mother had her first period when she was, I think, 14 or 15. I had my first period when I was 12, and my daughter had her first period at 11. And आज भी हमारे पास OPD में patients आते हैं where a young girl as young as 8 years is having period. Now this is very, very disturbing because a girl who is so young does not even know कि पीरियड होने का क्या मतलब है. What are the implications of having a period? So how does she take care, and what does actually having a period mean? So it's actually very disturbing, and इसका एक medical problem भी है कि अगर early period हो जाते हैं तो early period actually signal the closure of certain इसको हम मेडिकली एपिफिसिस बोलते हैं. जो बोन के एंड्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. सो अगर किसी को अर्ली पीरियड होता है तो उस बच्ची की हाइट बढ़ना भी कुछ हद तक रुक जाती है. कमिंग बैक टू क्यों ऐसा हो रहा है, सो दिस इज डेफिनेटली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. टुडे इज अ सोसाइटी जहाँ पे आवर किड्स आर फिजिकली इनएक्टिव. एक्टिव की तो एक्टिविटी की तो बात ही हम छोड़ दें. वो लोग सारे बच्चे फिजिकली इनएक्टिव हैं. दे आर ऑलवेज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. Gone are the days when we used to go out in the parks and play, and our parents had to actually pull us back into our houses. लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो स्क्रीन स्टेशन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके ऊपर बैठ के खेलते हैं. PlayStation, So हाँ, प्ले स्टेशन बोलते हैं. So PlayStation, but not going to play actually. Huh? yeah, no, not really going to play. So physical activity and of course exposure to bad food. And मैं ये सबको बोलती हूँ, the so-called good food is actually a very bad food. The best food is घर का खाना, and somehow this does not resonate with people. This is the saddest part. आजकल के बच्चों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा anxiety, and all these things disturb our hormones at the level of the brain. So doctor, another question was, what is a regular or normal cycle for a period? Is there something like a normal cycle? Yeah. So once again, I'm glad you asked this question. So there is nothing called as 28-day cycle. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि नहीं 28 दिन का पीरियड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल पीरियड होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. The period length could vary anything between 22 to 35 days. यानी कि अगर आपका पीरियड 22 दिन से 35 दिन के बीच में आता है तो इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल. देन द लेंथ ऑफ द पीरियड इट शुड बी एनीथिंग बिटवीन 2 to 7 days. मतलब अगर आपका पीरियड 2 दिन भी चल सकता है, 7 दिन तक भी चल सकता है. लेकिन अगर आपका पीरियड पहले 7 दिन चलता था, अब खाली 2 दिन का रह गया है. दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच लॉट ऑफ वुमेन आर फेसिंग, स्कैंटी पीरियड्स. या पहले 2 दिन चलता था, अब 7 दिन का हो गया है. नाउ यू आर bleeding heavily and passing clots. That's also abnormal. A normal woman should not have any pain during periods. Little bit of pain, discomfort is fine. लेकिन ज़्यादा pain period में होना किसी अंदरूनी प्रॉब्लम की निशानी हो सकती है. So 22 to 35 days, 2 to 7 days without any pain, and also there should be no bleeding in between 2 cycles. यानी कि अगर आपका पीरियड अब ख़त्म हो गया और नेक्स्ट पीरियड शुरू होने के बीच में
बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए. There should be no bleeding post intercourse. There should be no bleeding post menopausal. So if any one of you who is watching this and you find कि इनमें से कोई problem है, it is time to go to your gynecologist and seek help. That's very very shocking. Because I always to associate कि period मतलब pain तो हो गई. Why do so many women have pain then? So जैसे मैंने शुरू में बताया कि period is nothing but the expulsion of the lining of the uterus. So uterus contract करता है to push that blood and the lining outside, and when it does that, there's a hormone or a chemical which is released in the body जिसको हम prostaglandin बोलते हैं. See, prostaglandin क्यों release होता है हमारी body में? So that uterus can contract well and expel that blood out, right? This is why a normal woman gets little bit of pain. But ये pain ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हर 5 दिन में 2 या 3 टैबलेट लेनी पड़ रही है. 1 और टैबलेट अगर आपने ले लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, आज स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, आपने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली, दैट्स फाइन. बट अगर आपको 5 के 5 दिन दवाई खानी पड़ रही है, दिस कुड मीन दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड एंड डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. And another thing which I would like to add here is taking a painkiller bad in period. No, it is absolutely not a problem. आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो, जो भी आपको ब्रांड सूट करता हो पेन किलर के लिए, लेकिन अगर आपको 5 दिन पेन किलर लेना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ओके, थोड़ा बहुत पेन हो गया तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या 5 दिन पेन हो रहा है तब प्रॉब्लम है और तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. So doctor, a lot of women are confused about which product to use for their menstrual hygiene. So आजकल इतने सारे products आ गए हैं, pads, tampons, menstrual cups और इतने सारे और कुछ. तो do you have any insight which is the best product out of these? So बेस्ट प्रोडक्ट वो है जो आपको पसंद आए. पेशेंट, आई मीन जो पर्सन है उसको यूज़ करना. प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम अ डॉक्टर सो आई ऑलवेज टॉक पेशेंट्स एंड आई से पेशेंट्स, बट एनीबडी इज़ यूजिंग अ पैड जो आपको कंफर्टेबल है वो आपके लिए सही है. बट अभी हम डिस्कस करते हैं कि हर मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो है कि पैड्स. नाउ पैड्स आर मोस्ट कॉमन, इजीली अवेलेबल एंड वेरी कन्वीनियंट. आजकल की डेट में कितने टाइप के पैड्स अवेलेबल हैं, लॉन्ग पैड, शॉर्ट पैड्स, नाइट पैड्स, डे पैड्स, एंटी बैक्टीरियल, फ्रेग्रेंट, यू नेम इट एंड इट इज़ देयर. पैड्स के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है. पैड्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि पैड्स, आई मीन दिस इज़ अ नॉर्मल पैड, एवरी वुमन नोज दिस, दे आर मेड अप ऑफ कॉटन और रेयॉन एंड समटाइम्स सिंथेटिक जेल. एक शायद कॉमन आदमी को ये पता भी नहीं होगा कि जो ये पैड होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, विच मीन्स व्हेन यू थ्रो योर पैड इन अ डस्टबिन और मे बी व्हेन इट लैंड्स इन द कम्युनिटी लैंडफिल, एक पैड को 500 ईयर्स लगते हैं, 500 ईयर्स टू गेट completely, you know, gone from the environment. Now an average woman, she has about 400 to 500 periods in her lifetime, right? With this calculation, अगर वो 8 से 10 पैड भी हर महीने यूज़ करती है, that means she generates almost 4,000 to 5,000 pads per her entire lifetime, which is too much. So the statistics say India alone generates 12.3 billion pads every year. Now this is too much of an environmental load. Something definitely needs to be done about this. So pads, they offer a lot of convenience, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका environmental load बहुत ज़्यादा है and lot of people do not know how to throw it, how to dispose it. Is there a correct way to throw it? So a lot of people even flush it, which is not right. I mean, it can clog the drains and everything. Ideally, it's a human waste. It should be disposed in a biomedical waste category. But at least इसको wrap करके आप एक proper तरीके से डस्टबिन में डालिए
एंड सो दैट जो वर्कर्स होते हैं जो उसको हैंडल करते हैं वो भी इसको एक्सपोज ना हो. Theoretically, if a person is HIV positive or has some kind of infection, any person who's handling this also gets exposed to all this. So environmental load बहुत ज़्यादा है, plus risk of spread of infections to the people who are dealing with this waste ये भी बहुत ज़्यादा है. So doctor, actually I'll have this board as well. हाँ So जी, when you're हाँ talking about pads and the environment, so you're saying basically it's very environmentally degrading. Yeah, it's not So I'm putting an favorable to X. the environment. X. Finance, yes, it will cost maybe about 100 rupees per month. Okay. So this is okay. Convenience, very convenient. You know, So I'll put it's a like double tick. yeah, because वो हर जगह available होते हैं हाँ. and हर type के available हैं. Health में थोड़ा बहुत और भी problem है कि since pads they soak the blood coming outside, so the blood is coming from here and यहाँ पे pad लगा तो blood उसको soak कर लेता है. But it can cause lot of irritation, you know, redness, itching. अगर बहुत देर तक किसी ने pad use किया है, अगर किसी को किसी चीज़ से allergy है, एंड इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि आप पैड लगाए तो स्विमिंग नहीं कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते हो. So am I right to say health में X? हेल्थ में या यू Small कैन पुट X. सिंगल एक्स, एनवायरनमेंट में आप डबल एक्स डाल दो. So मैं X डाल रहा हूँ और एक टिक भी डाल रहा हूँ साथ में. हाँ ठीक है ठीक है. ठीक है? सो नाउ अब इसके चलते कन्वीनियंस के चक्कर में चलते एक और प्रोडक्ट हुआ विच इज़ टैम्पॉन. नाउ टैम्पॉन इज़ अ सिलेंड्रिकल डिवाइस विच इज़ अगेन मेड अप ऑफ कॉटन या रेयॉन होता है. सो रेयॉन इज़ अ सेमी सिंथेटिक फाइबर. So what it is done is it soaks the blood in the vagina. So a woman has to put this inside the vagina and as the blood it is coming, it soaks it up there. And after 4 to 8 hours, preferably 4 hours, anybody who's watching this tampon must be removed. So Every 4 hours. Every 4 hours. Depends upon कि blood flow कैसा है. अगर first और second day किसी का heavy blood flow होता है तो 4 hours में इसको निकाल देना चाहिए. एंड अगर किसी का कम फ्लो है या लेटर डेज ऑफ पीरियड है तो आप इसको मैक्स टू मैक्स 8 आवर्स. 8 आवर्स के बाद नहीं डालना चाहिए. वाई? बिकॉज अगर टैम्पोन अंदर रहा विच इज़ अ ब्लड सोक्ड टैम्पोन, सो इट कैन कॉज इन्फेक्शंस. In fact, forgotten tampon is a medical reality. It can cause something which is known as a toxic shock syndrome, where a person can actually land up in an ICU. It can cause infection. Imagine अगर ये tampon अंदर ही चला गया और भूल गए 6-7-8 दिन तक वो अंदर ही अंदर पड़ा रहा, it can cause massive infection. So anybody who's using a tampon should be careful of this, क्योंकि पैड में तो बाहर दिखता है, इसके अंदर दिखता नहीं है. बट इसके साथ कन्वीनियंस क्या है कि आप स्विमिंग कर सकते हो, आप हाइकिंग पे जा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, स्पोर्ट्स कर सकते हो. सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो वी वुड से बोथ, यू नो, राइट एंड रॉन्ग बोथ. इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन. इफ़ यू फील कि आप ज़्यादा स्विमिंग नहीं करते हो ये, तो आप पैड के साथ भी ठीक रहोगे. एंड नाउ डेज टैम्पॉन्स ऑल्सो कम इन अ बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी. So health you said X and Y both. X and Y both, provided आप इसको caution के साथ use करें. Another thing is some people are not comfortable putting something inside. So lot of women are not comfortable. So that is why मैंने आपको beginning में बोला था कोई भी best menstrual hygiene product नहीं है. If somebody says कि भी मुझे टैम्पोन डालना पसंद नहीं है तो ठीक है, ये आपकी चॉइस है. आप नहीं डालना चाहते, इट्स ओके, इट्स ओके. बट एज अ वुमन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये चॉइसेस हमारे लिए अवेलेबल हैं. कन्वीनियंस, येस ऑफ कोर्स, पैड्स आर इजीली अवेलेबल. टैम्पोन शायद छोटे शहर में नहीं मिलता होगा, बट कन्वीनियंट ऑल्सो. Single tick. Finance, it is as expensive as a pad, so it's okay. About 100 rupees or 150 rupees per month it should cost. Environment, it poses the same problem like a pad, which is a specifically non-biodegradable pad. So are both equally bad kind of? Equally bad because they're made from the same thing. अब आते हैं third category, which is the menstrual cup, and in my opinion, this is the best. Now, this menstrual cup is basically a bell-shaped device with a stem in, beneath it. Instead of soaking the blood, it collects the blood.
So when you use a pad or a tampon, it soaks the blood while a cup collects it, right? So this is a basic difference. So जो rashes or itching की problem pad के साथ होगी, वो इसके साथ नहीं होगी. So for this, what happens is a woman is supposed to put this thing inside the vagina. So from here, So they fold it. they fold it. There are various ways to fold it. In case somebody is interested, they can go on to our channel and watch videos about menstrual cup. So it goes inside like this and it opens up. So we have to remember, जो vagina होती है, it is a potential space. It's not like a tube. It's a potential space. Normally it's closed. When you put something, it opens up. At the time of sexual activity, it opens up. When the baby comes, it opens up. So it's not like an open tube. Now, when a cup goes inside, it opens up and it actually forms a seal so that the blood doesn't leak out. So यहाँ से bleeding हो रही है, यहाँ पे cup है, it collects. And after maybe 4-5 hours, when a woman knows that, it may be full, she can just remove it, just rinse it under the running water and again put it inside. It's as simple as this. So there is no environmental, footprint. So how long can you use this for? How many days, months, years? 4-5 years. 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 If you maintain a menstrual cup well, you can use it for 4-5 years and it hardly costs 250 to 500 rupees depending upon the brand of the cup. So should I put like a triple? Triple tick. And finance also triple tick, double tick. Actually triple tick. Convenience, some people again, not comfortable putting it inside, like people don't like tampons, menstrual cup also. But it's just a matter of getting used to this entire thing, and once you get a hang of it, उससे बढ़िया चीज़ कोई भी नहीं है. Health me, it is absolutely fine to use a menstrual cup. So here, take here. Convenience, what do you think? I would at least put a single tick to it. X भी एक लगाना है या नहीं? नहीं, X नहीं लगाना है. नहीं. I mean, this is too good a product to put any X into it. Only thing is, छोटे शहर में I don't know available होगा या नहीं, but आजकल online सब जगह मिलता है. आप कहीं पे भी online order करो, मिल जाना चाहिए. Doctor, I have a couple of questions. Most of the advertisements I've ever seen around menstrual hygiene products have mostly all been pads. So why is it that tampons and menstrual cups are not advertising themselves? वो advertise क्यों नहीं कर रहे हैं? I mean, you know it now. So much of business coming from the pad, which is getting offset by just 500 rupees in 5 years. तो एक बार आप ये खरीदो, तो वो 5 साल आपको तक खर्च नहीं करना 5 साल पड़ेगा. कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ेगा. So Tampons के doctor, साथ- instead of pad man, we should make cup man, literally the movie. Like honestly, I'm not joking. Like Yes, absolutely, absolutely, absolutely. Cups are the way to go forward. Cups is something which we all owe it to our environment. And it's a natural waste. It should go like a natural waste. Why should we create another waste? got it. But why not tampon ads there? Because even tampons, you do require it frequently. So there is money to So- be made for the companies. Yeah. So tampons के साथ क्या है कि हमारी, like I see it with my patients also, not many people are comfortable using a tampon. And एक और भी चीज़ हमारी country में सिखाई जाती है लोगों को, that if you put a tampon or a menstrual cup inside, a woman may lose her virginity. This is very, very sad. In today's world, we equate hymen with virginity. And we need this to be told to our girls that virginity is beyond your hymen. Period. हमारे यहाँ लड़कियों को ये सिखाया जाता है, please don't do anything down there, you might break your hymen. So there is a lot of cultural bias when it comes to using a tampon or a cup. But in my opinion, my opinion probably would have sounded a very strong opinion, but I truly believe in this. We need to teach our girls that they are much beyond their hymen. So just because you've lost your hymen does not mean you've lost your virginity. Lost ka to, I mean, that's a very big word. The hymen comes in different shapes and sizes. Somebody could be born without a hymen. A hymen could break because of physical activities like playing, riding a horse or anything. Or even if it is lost because of a sexual activity, why not? Why not? What's wrong in it? Huh, of I course. mean, it's, yeah. Another question I have in relation to pads is that there's a lot of advertisements right now around
organic pads. So are organic pads better than regular pads? And what's the difference between an organic pad and a regular pad? The biodegradable pads are the so-called organic pads. So they are made with, instead of the normal cotton, they are made up of banana, jute fibers and bamboo fibers. So एक और प्रॉब्लम होती है जब नॉर्मल पैड बनता है तो they use a normal cotton and they use rayon, but the entire thing is bleached to give a pristine white look. आपने देखा होगा पैड हमेशा एकदम pure white दिखता है. Now a process which is known as bleaching is done to make this happen. So in that bleaching process, a lot of products like dioxin and VOCs are toxic compounds. These are volatile organic compounds which are released. Now imagine a pad which could be having dioxin or VOCs so many days in a month throughout a lifetime of a person. So nowadays there are studies going on, scientific studies जिसमें ये प्रूव किया गया है कि VOCs जो है they are the reason for various cancers, endometrial cancers, ovarian cancers. So I'm not saying कि हर पैड से कैंसर हो जाता है, तो anybody watching please don't go into that panic mode, but there is a potential. That's why menstrual cups are the way to go. There is nothing which is soaking up inside. So इसके बारे में बहुत Does the research चल menstrual रही है. cup sometimes leak or like spill? Yes, it can leak. So अगर किसी का heavy flow है तो वो leak कर सकता है. तो फिर उसमें with practice you know कि आपको first day instead of 4 hours 3 hours में change करना है, fourth day आपको 6 hours में change करना है, last के दिनों में आप 8 hours में change कर सकते हो. This comes with practice. First 2-3 cycles could be little difficult for any woman, but with practice ज़्यादातर लोग जो हैं वो menstrual cup से बहुत happy होते हैं. Is it right for me to re-summarize that for most women, not necessarily all, it's a personal choice at the end of the day, that a menstrual cup is usually high on health, it's relatively convenient, it's good on the, very, very good on the pocket, and it's also environmentally friendly. So it's probably the best choice for most women. Absolutely. But unfortunately, most women and RCB doesn't have a cup. So doctor, we spoke a lot about periods, early periods. Now I want to move on to PCOS and PCOD. To be completely honest, मेरे को उसके बारे में बहुत कम पता है. Full form भी kind of शायद से नहीं पता है. तो वो होता क्या है? वो इतना common क्यों हो गया है? So once again, PCO, PCOD, PCOS सब एक ही चीज़ है. So this it's an acronym. It stands for polycystic ovarian syndrome या polycystic ovarian disease. जैसा नाम से ही पता लगता है, polycystic मतलब ovaries जो हैं उसके अंदर multiple छोटे-छोटे cysts बन गए. तो ovaries क्या होती है? ये ovaries होती हैं. अगर इस ovary में छोटे-छोटे बहुत सारे cysts बन जाएंगे तो उसको हम polycystic ovary बोलेंगे. बट आज की रिसर्च कहती है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है इट इज़ एक्चुअली द टिप ऑफ अ आइसबर्ग. उसके नीचे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसके लिए खाली ऊपर से पॉलीसिस्टिक ओवरी आ गया. बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो है इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ये होता है. दैट इज़ वाई जो PCOD के पेशेंट्स होते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाता है, उनको ओबेसिटी ज़्यादा हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर. सो इस पूरी चीज़ को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं. PCOD इज़ नॉट जस्ट अ गायनेक प्रॉब्लम, इट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम. इट हैज़ गॉट lot of things which can be impacted. So उसको हमने ऐसे ही हैंडल करना है जैसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं या हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करते हैं. तो कमिंग टू PCOS क्यों ज़्यादा कॉमन हो गया है? Doctor, one question before I ask you that. So आप बोले about diabetes and PCOS. So you said कि PCOS होने से टाइप 2 डायबिटीज़ का चांस बढ़ता है, I think. So not like that. जिस रीज़न से PCOS हो रहा है उसी रीज़न से टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है. Oh, अच्छा. So like that. So both of them are interconnected to each other. जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है ऑलमोस्ट सेम रीजंस की वजह से PCOS हो रहा है. अच्छा, तो यूजुअली दोनों होता है. हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज़ भी होता है और जिनको PCOS है उनको आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है. Got it. आप बोल रहे थे, sorry I interrupted you, around like what are the reasons for early PCOS? So पहली बात तो just to give you some statistics, today
PCOS is like a gynecological epidemic. मतलब वर्ल्ड वाइड 3 to 5 women में से एक women को PCOS का कोई ना कोई manifestation है. It is so shocking. मतलब हर इंजीनियरिंग क्लासरूम में एक जन को पीसीओएस है. नहीं. अच्छा. नहीं, don't worry. Okay, now I got it. Okay, engineering class में खाली 5 लड़कियाँ हैं. और 50 मैन anyway. Okay. Yeah, so the statistics say कि 3 से 5 लड़कियों में एक को PCOS का कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन हो सकता है वर्ल्ड वाइड. दैट मीन्स कहीं ना कहीं ओवर एज अ सोसाइटी समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, जिसमें आजकल बच्चों को ज़्यादा PCOS हो रहा है. आज से 20-30 साल पहले हमारी मॉम्स को, हमारी ग्रैंड मॉम्स को कभी किसी को PCOS नहीं था. मुझे कभी PCOS नहीं था. बट टुडे एवरी यंग वुमन इज सफरिंग फ्रॉम सम मैनिफेस्ट, नॉट एवरी, frequent, like lot of women. एंड आज भी अ लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी, वहाँ पे PCOS नहीं है. नहीं है. गांव में PCOS नहीं है. यूजुअली लोअर इनकम में ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होता है, आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक नहीं है. सो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जिनको हम बोलते हैं कि दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ एफ्लुएंस. non-communicable diseases and communicable diseases. Non-communicable diseases कैसी होती हैं? जो diabetes, hypertension, obesity, these are non-communicable diseases. They happen in affluent class more. So PCOS में मैं सब लोगों को बोलती हूँ बड़े लोगों की बड़ी बीमारी है. So doctor, that's very surprising for me. So ऐसा क्यों है कि affluent people get PCOS but not so affluent people don't really get it as much? So अगर आपने ये अभी समझा कि PCOS खाली ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है. There is a bigger problem going inside the body जिसको metabolic syndrome बोलते हैं, which is affecting so many things in the body including the ovary. Now this happens because of faulty diet, consumption of processed and packaged food, lot of stress, physically sedentary life and increased screen usage. दैट इज़ वाई मैं सबको बोलती हूँ कि क्यों 30 साल पहले हमारी नानी या दादी को PCOS नहीं था. आज भी हमारे घर में जो भी वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं, लेट्स से आवर मेड्स और व्हाटएवर, उन लोगों को PCOS नहीं है. प्रॉबेबली दे आर नॉट एक्सपोज टू प्रोसेस्ड फूड्स. वो लोग फिजिकली बहुत काम करते हैं, रात के 9 बजे सो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में इंस्टाग्राम, फेसबुक और नेटफ्लिक्स नहीं है. दैट इज़ वाई वो हेल्दी है और हमारी नानी और दादी भी हेल्दी थी. तो लोअर इनकम ग्रुप में आप बोल रहे हो कि वो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं और वो ज़्यादा मतलब स्क्रीन टाइम कम है और ये सब, तो उनको PCOS इसलिए नहीं हो रहा है. बट हायर इनकम ग्रुप में वो ये सब सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, पैकेज फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उनको PCOS के चांसेस बढ़ रहे हैं. बिल्कुल 100%. आई वुड टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो वन ऑफ माई पेशेंट जिनको PCOS था, उनको हम ट्रीट कर रहे थे, तो एक दिन वो अपनी मेड को मेरे पास लेके आई और उन्होंने बोला कि मेरी मेड को भी अब पीरियड ठीक से नहीं आ रहा, तो आप उनको देखो. एंड द मोमेंट आई आस्क्ड हर मेड की, जब मैंने हिस्ट्री ली, तो उन्होंने बोला कि मैम जब मैं गांव में थी तो मेरा पीरियड बिल्कुल ठीक आता था. जब से मैं इन मैडम के घर आई हूँ तब से मेरा पीरियड गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज मैडम रात को 2 बजे सोती है, हर रोज़ खाने में पिज्ज़ा बर्गर बनता है. एंड इट वॉज सच अ स्टार्टलिंग थिंग कि जो औरत अपने गाँव में बिल्कुल ठीक थी, यहाँ आके 1-2 साल में सब इम्बैलेंस हो गया. सो मैसेज टू ऑल विमेन, गांव में रहो, गुड़गांव में नहीं, फॉर मल्टीपल रीजंस. सो व्हाट आर द कॉमन डूज एंड डोंट्स फॉर PCOS? लाइक यू नो कि अगर PCOS हो गया, चलिए पता चल गया, तो अब क्या नहीं करना चाहिए उन्हें और क्या करना चाहिए? इज इट ऑल्सो रिवर्सिबल? सो जैसे मैंने बताया, ये 4 कारणों से ज़्यादातर PCOS होता है. कि अगर आप गलत खाना खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप सोते नहीं हैं, वंस अगेन एडिक्वेट स्लीप अकॉर्डिंग टू सर्केडियन रिदम एंड डिक्रीज स्क्रीन यूजेस, यही मेन चीज़ें हैं. तो क्या करनी है अगर आपको PCOS ठीक करना है? ये 4 चीज़ों पे काम करना है. कि आपको केवल घर का खाना खाना है, फिजिकली आपको बहुत एक्टिव रहना है. यू हैव टू थिंक मैं और क्या करूँ, हाउ कैन आई बी फिजिकली मोर एक्टिव, and decrease the screen usage as much as possible. अब today we are living in a digital world where screen तो use करना ही पड़ेगा, लेकिन unproductive scrolling उससे आप दूर रहें. and make sure that you never ever compromise on your sleep. that is why इसको beauty sleep बोलते थे शायद पहले. and you would be surprised to know the easiest way to lose weight is to sleep rather than working out in the gym. People who sleep less are more likely to gain weight. Why? How, doctor?
सो दिस इज़ बिकॉज आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंड कॉर्टिसोल इज़ वन रीज़न ऑफ ऑल दिस. सो वेट लॉस के लिए सोना ज़रूरी है. सो डॉक्टर एक चीज़ बहुत बार रिपीट की है कि घर का खाना पे वो बहुत एम्फेसिस देती है. ये मैं अपने वीडियोस में भी बहुत बार बोलता हूँ कि घर का खाना खाओ, लेकिन सिर्फ घर का खाना नहीं, घर पे बना हुआ खाना. आजकल हम घर पे भी बाहर का ही खाना खाते हैं, चाहे डिलीवरी ऐप के या जो पैकेज फूड है वो भी आपके घर पे नहीं बना, वो बाहर से ही आ रहे हैं. सो घर का खाना खाइए, सिर्फ घर पे मत खाइए. So doctor, how does a female find out कि इसको PCOS हुआ है? Like what are the common symptoms? सो जो फर्स्ट सिम्टम जो ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है वो है इरेगुलर पीरियड्स या मिसिंग पीरियड्स या डिलेड पीरियड्स या स्कैंटी पीरियड. जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आपका पीरियड पहले 5 दिन चलता था, अब खाली 1 या 2 दिन चलता है. सो पीरियड का अमाउंट कम हो गया, पीरियड मिस होना शुरू हो गए. सेकेंड इज़ बॉडी में एक्ने होना, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाना, हमारी बॉडी में हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, सिर के बाल ज़्यादा गिरना. सो ये क्यों होता है कि हमारी बॉडी में मेल हार्मोन्स की एक्सेस हो जाती है, इसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं. तो जब ओवरीज पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं तो दे प्रोड्यूस हार्मोन्स विच आर नोन एज एंड्रोजन्स. अब एंड्रोजन से क्या होता है, हमारी बॉडी वो सारे जो मेल पैटर्न मैनिफेस्टेशंस होती है वो वैसे होता है. जैसे मेल्स में बाकी बॉडी पे बाल ज़्यादा होते हैं, सिर के बाल कम होते हैं, तो फीमेल्स में भी अब ऐसा होना शुरू हो जाता है कि बाकी बॉडी पे बाल ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे और सिर के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे. एक हार्मोनल एक्ने होता है कि यहाँ इस लेवल पे आपको एक्ने आना शुरू हो जाता है, विच इज़ वेरी सेंसिटिव टू दी हार्मोनल चेंजेस. एंड थर्ड इज़ इनएबिलिटी टू लूज वेट, कि आपका वेट बढ़ता जा रहा है एंड चाहे आप कोई भी एफर्ट करते हैं तो आपका वेट नहीं कम हो रहा है. देन ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी, डिफिकल्टी इन कंसीविंग अ बेबी. Oh my God. सो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, हम लोग अगर ये समझाएंगे तो मेडिकली एक रॉटरडैम मेरा ऑडियंस काफी स्मार्ट है, आप समझाइए. अच्छा. सो मेडिकली हम लोग PCOS के लिए बोलते हैं कि रॉटरडैम क्राइटेरिया होता है. आप चाहें तो उसको गूगल भी कर सकते हैं. इसके बेसिकली 3 फीचर्स होते हैं. एक होता है अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं. सेकेंड होता है कि अगर आपकी बॉडी में देयर इज़ अ फिजिकल और अ केमिकल एविडेंस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस, यानी कि अगर आपको पूरी बॉडी पे बाल ज़्यादा हो रहे हैं, इसको हम हर्स्यूटिज्म बोलते हैं, या स्कैल्प हेयर लॉस हो रहा है, या एक्ने हो रहा है. तीसरा, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ओवरीज आर लुकिंग पॉलीसिस्टिक. अगर इन 3 फीचर्स में से 2 फीचर्स भी हैं, इट क्लासिफाइज यू एज polycystic ovarian patient. What are the top 2-3 ways to treat PCOS? So number 1 is lifestyle. लोग बोलते हैं कि PCOS क्या मैम रिवर्सिबल है? I would ask them this question. अगर कोई आदमी वेट लॉस करना चाहता है, क्या वेट गेन रिवर्सिबल है? रेवंत, I'll ask you. क्या वेट गेन रिवर्सिबल है? Yeah. Of course. So if the answer to this question is yes, then the answers to PCOS reversal also should be yes. अगर आपने अपना वेट लॉस कर लिया बाय फॉलोइंग अ गुड डाइट एंड एक्सरसाइज, लेकिन अगर आपने 1 साल के बाद फिर से गलत खाना शुरू कर दिया तो वेट गेन फिर से आ जाएगा. यहाँ पे भी ऐसे ही है. अगर आपने अपनी PCOS रिवर्स कर ली, लेकिन अगर आप अगले साल फिर से गलत खाना शुरू हुए, फिर से आप बेड पे पड़ गए, फिर से आपने सब कुछ गलत किया, तो आपका PCOS वापस आ जाएगा. सो वॉट एवर एफर्ट इट टेक्स, इट्स वेरी सिंपल. इनफैक्ट मैं अपने सारे पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी सिंपल. भगवान ने हम सबको हेल्दी बनाया है, भगवान ने हम सबको अनहेल्दी नहीं बनाया. If we are unhealthy, that means we really messed it up. So doctor, we spoke about early periods, PCOS, and I'm just following the life cycle of a woman. If a female is potentially getting sexually active, and there are like again 2 scenarios. One, she does not want to get pregnant, and one, she wants to get pregnant. So we'll cover both. Let's focus on the first one. If she does not want to get pregnant, then what are the options for her, and what should she keep her in mind when she's becoming sexually active? So the first thing is, if you have decided that you want to be sexually active, is understand that being sexually active comes with a lot of responsibility towards your own self, leave alone anybody else. This means a physical responsibility, which means that you protect yourself from pregnancy and STDs, and a mental and an emotional responsibility that you are comfortable with the act. Nobody is misusing you.
or abusing you or whatever. So ये बहुत important है. Once you have decided कि now I want to be sexually active, it is very important कि आप अपनी contraceptive choices के बारे में अच्छे से आप अपने आप को aware करें. बहुत लोग मेरे पास आते हैं, oh ma'am, I did not know this. But then I ask them, why didn't you know about this? It is your responsibility to be aware of yourself. Ma'am, I think this is one thing is that I think a lot of people in India learn about a lot of this, unfortunately, through porn. हाँ. So, Which is वहाँ पर very the sad. contraceptive and all ये सब तो मतलब no one explains. So, हाँ, so it is important कि जब आप ये decision लेते हैं कि आप sexually active होना चाहते हैं, at least अपने आप को educate करें. There are various methods and एक और चीज़ है कि there is nothing called as a best contraceptive method. जिस दिन किसी को ये best contraceptive method मिल जाएगा ना, उसे double triple Nobel Prize मिल जाएगा. So there are various methods. One is that you follow a menstrual cycle, but वो काफ़ी risky method है. So there are some days जब ovulation होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था ovulation होता है, and the egg stays live for about 2 days. तो अगर intercourse उस period के दौरान होता है, chances of getting pregnant are high. लेकिन because of PCOS and other hormonal disorders, sometimes ovulation आगे पीछे हो जाती है. तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा. सो ये मेथड खाली उन लोगों के लिए ठीक है who don't mind a pregnancy. फिर उसके बाद आता है condoms. Now condoms are barrier method of protection, which means that they provide a barrier between a egg and a sperm. Now male condoms के बारे में सबको पता है, but there is something known as a female condom also. तो आजकल ये काफ़ी शहरों में easily available है. तो अगर आप यू आर नॉट श्योर ऑफ योर मेल पार्टनर, अगर आपको लगता है कि आपका मेल पार्टनर नहीं यूज़ कर रहा या यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, तो आज की डेट में एक फीमेल कॉन्डोम भी अवेलेबल होता है. डू यू वांट? what does it look like? I have no idea. So we have a sample here. So this is basically like a pouch, and you know, it is like this. This end goes inside the vagina. It's got a ring here, so it gets stuck up into the vagina, and this entire thing comes out. So this is again as effective as a male condom is, but it may not be easily available, and it is as effective. So doctor, why is it like that a male condom is, if I'm right, why is it that a male condom is used way more frequently than a female condom? Because it is publicized more, it is easily available, it is less costly, and women do not find it very easy and comfortable to put something inside. Purely from a pleasure perspective, does a female condom reduce pleasure? No, not at all. Not at all. Not at all. So it is to be used in case you're not sure of your male partner, whether he's going to use a condom or So not. basically every Gen Z. No, I'm joking. Yeah. So doctor, I'm also curious about how pills are used. Like मैं बहुत ads देखता था iPill और बहुत सारे ads देखता था कि वो आ रहे हैं, if someone doesn't want to be pregnant, they just pop a pill and they're like, okay, they're no longer. So how does it work? Why do people use pills? And is condom the default choice, or should people use pills as well if they need to? No. So like I said, there are various methods. जैसे आपने first आपको बताया था, there are, you follow particular days of the cycle, then you have condoms, male and female, then you have pills, then you have something known as IUD, then you have permanent sterilization methods also. So let's talk about pills. Pills जो हैं basically 3 type की होती है. एक होता है regular contraceptive pills, which a person has to take regularly so that ovulation ना हो. अब कैसे जो पिल कैसे काम करता है? नंबर 1, इट स्टॉप्स द ओव्यूलेशन फ्रॉम हेयर. सेकेंडली, इट मेक्स अ सर्वाइकल म्यूकस. यहाँ पे सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स है तो यहाँ पे म्यूकस होता है. इट मेक्स इट वेरी थिक सो दैट द स्पर्म्स कैन नॉट स्विम अप, एंड इट मेक्स द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस very thin so that it is not conducive to implantation. That's how the pills, regular contraceptive pill works. So this is like a regular contraceptive pill which has got either 21 or 28 days depending upon the composition of the pill. फिर एक pill होती है which is like this. This is called emergency contraception pill, which means that you've not used any contraceptive method, and now there is a risk of pregnancy. Either your partner did not use a condom or it broke or whatever, then you need to use a pill. Now this pill is totally different from this pill. Totally different. What's the difference? अभी मैंने बताया ये 21 दिन और 28 दिन की पिल है और ये खाली एक है. दिस इज टू बी यूज्ड टू प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी
as a regular method. This is to be used immediately post intercourse. One tablet is to be taken. But it is not like this कि हर बार intercourse हुआ एक tablet खा लिया. This is not meant for this. In case a person is regularly sexually active, they must use this pill. Contraceptive pill. A regular contraceptive pill. And once again, do not use a pill just because your friend is using a particular pill. आज की डेट में कम से कम 200 different types of pills available हैं depending upon different types of hormones it contains, and we as doctors give a particular pill to a person depending upon their medical condition. Somebody who is a smoker, somebody who is obese या कुछ उसको और problems हैं, and also not everyone is a good candidate for a pill. So अपने आप कभी भी नहीं खाना है कि मेरी friend ने ये use किया तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ. एंड ऑल्सो पिल को खाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है दैट यू आर सपोज टू यूज़ इट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड एंड यूज़ इट द वे द डॉक्टर tells you. While this is a pill which can be taken within 72 hours of unprotected intercourse. And then there is a third type of a pill which is the abortion pill, which means जब pregnancy हो गई है तब क्या लेना है. Once again, that is to be strictly taken only after the doctor's advice. And all these three pills are great. I mean, they have revolutionized the entire woman's health. They made women independent. But ये आपको अपने आप नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर से बात करके लेना है. So to re-summarize, this is a regular contraceptive pill, and this is an emergency pill, Yeah, and then there is an abortion pill. yeah. And this, with doctor's advice, potentially can be used regularly. This is only after intercourse, and the abortion pill is after pregnancy. Yes. Okay. So I have seen so many times कि लोग पैनिक में क्या करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसकी 2 खा ली, 3 खा ली, 4 खा ली, या ये 4 खा ली. ऐसे नहीं होता है भाई. सो इट्स लाइक अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो आप प्लीज़ पैनिक मत करिए. टुडे इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री का जो अबॉर्शन लॉ है, इट इज़ द मोस्ट लिबरल लॉ इन द वर्ल्ड. यू कैन गो टू द डॉक्टर एंड इट्स एब्सोल्युटली लीगल टू गेट एन अबॉर्शन डन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. Are these habit forming in any way? कि नो नो नो, ये भी एक बहुत गलत धारणा है लोगों के अंदर कि अगर आपने पिल रेगुलरली आप यूज़ कर रहे हो तो वो सेफ़ नहीं होती. बिल्कुल सेफ़ होती हैं. दीज बर्थ कंट्रोल पिल्स आर एब्सोल्युटली सेफ प्रोवाइडेड आपके डॉक्टर ने आपको आपके लिए जो बेस्ट पिल है वो दी है. सो दे आर सेफ एंड आपको बीच में ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 6 महीने ले लिया तो आपको ब्रेक देने की ज़रूरत है. बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. So, doctor, we spoke about a female who's sexually active who does not want to get pregnant. Now I want to talk about a female who wants to get pregnant. So one of the most commonly Googled questions was, what are the best days to get pregnant? So is there anything like this कि ये particular day में करूँ तो like is it like does it increase the likelihood? Yes, very much, very much, very much. Like I said, इस मॉडल पे जब मैंने शो में बताया था कि यहाँ से ओवुलेशन होती है. सो जब ओवुलेशन होती है उसके बाद एग स्टेज लाइव ओनली फॉर 48 आवर्स. अगर उस 48 आवर्स में वो एग फर्टिलाइज हो गया तो हो गया, उसके पहले और उसके बाद सब बेकार है. Similarly, the sperm, when it goes inside, also has a life of 48 hours. So उस 3-4 दिन की जो बात है, बस उसी में सब कुछ होना है. So doctor, but how does someone find out that they are ovulating? Like how do they find out कि यही 3-4 days best है? हाँ, so टिपिकली अगर किसी का 28 डे का साइकिल होता है तो 14th डे ओवुलेशन होता है. सो उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स है. अच्छा. शायद आपको एज इंजीनियरिंग मैं भी इंजीनियर नहीं हूँ. आप इंजीनियर नहीं हो? अच्छा. I know, लगता हूँ बट हाँ. Okay. So typically ovulation happens 14 days before the periods. ये सेट है. So अगर किसी का 28 days का साइकिल है उसकी ओवुलेशन डे 14 पे होती है. हमेशा ऑलमोस्ट. हमेशा 14 days before the periods. अगर किसी का 30 डे का साइकिल है दैट मीन्स उसकी ओवुलेशन 16th डे पे होगी. अगर किसी का 15 क्यों नहीं? 14 दिन बाप रे माइनस करें. अच्छा. 30 डेज में से 14 दिन माइनस अच्छा, करें. हाफ नहीं है. हाफ नहीं है. 14 days before the periods, Okay. before the next period, Okay. ovulation होती है. So ovulation is a retrospective event. हम ये बता सकते हैं पिछले साइकिल में आपकी ओवुलेशन कब हुई थी, आगे नहीं बता सकते. So for someone जिसका पीरियड रेगुलर है,
कि हर महीने 30 दिन पे ही आता है, तो हमें पता है उसकी ओवुलेशन 16th डे पे होती है, तो 2 दिन उससे पहले और 2 दिन उसके बाद इज़ द फर्टाइल विंडो जिसमें उनको ट्राई करना चाहिए, और जिसमें उनको ट्राई करना चाहिए. Okay, so around midway of your नहीं, डोंट कॉल इट मिडवे, बिकॉज अगर किसी का 35 डेज का साइकिल है तो उसकी ओवुलेशन डे 21 पे होती है. हाँ. अगर किसी का साइकिल 40 डेज का है तो उसकी ओवुलेशन डे 26 पे होती है. So 26 का +-2. हाँ, +-2. Okay. 2 दिन इधर, that is the fertile period. So one is to first observe your cycles and see कि मेरा साइकिल कैसे है, तो मेरी tentative ovulation कैसे होती है. Plus there are certain physical signs in a woman's body. If she is careful, she can note it down कि ovulation के समय थोड़ा सा पेन होता है on either side depending upon which ovary is ovulating. तो उससे पता लग सकता है. सर्वाइकल म्यूकस जो होता है, वेजाइनल म्यूकस, उसमें भी चेंज हो जाता है. तो अराउंड द ओवुलेशन टाइम जो डिस्चार्ज होता है, इट बिकम्स वेरी थिन एंड वाटरी, एंड दिस हैपन्स बिकॉज गॉड हैज़ created a mechanism by which the sperms can float up easily. So these are very subtle things, but आजकल हमारे पास बड़े फैंसी ओवुलेशन टेस्टिंग किट्स आ गए हैं. अच्छा. आजकल हमारे पास एप्स हैं, आजकल हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स हैं जिससे हम एक्चुअली रियल टाइम में देख सकते हैं कि ओवुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है. तो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे हो रहा है. But how does an app, or how does this work, or how does an ovulation app work? Okay, so let's talk one by one. So इसमें it is like, this pretty much looks like a pregnancy test kit only. So this basically detects the level of a hormone called LH. So again थोड़ा सा technical, luteinizing hormone. ये जो हार्मोन है जस्ट बिफोर ओवुलेशन पीक करता है. तो इसमें हम एक लेडी को बोलते हैं कि जस्ट बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ओवुलेशन 3-4 दिन पहले अपना यूरिन टेस्ट करते हो. तो उसमें एग्जैक्टली ऐसे 2 ड्रॉप्स यहाँ पे डालें तो आपको लाइंस दिखती हैं. जिस दिन इसमें आपको डबल लाइन दिखती है, दैट मीन्स इन नेक्स्ट 24 आवर्स यू आर अबाउट टू ओवुलेट. उस समय LH पीक आ जाती है. तो उस समय इफ दे ट्राई दे हैव हायर लाइकलीहुड ऑफ conception. And apps में भी यही होता है. बेसिकली दे यूज AI जनरेटेड डेटा टू सी कि आपका साइकिल कैसे. तो जो मैथ्स में आपको करने को बोल रही थी वो मैथ्स जो है ना AI कर लेती है. उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे जो आपने एक्सप्लेन किया. एग्जैक्टली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आजकल लोग हर चीज ऐप से ही ढूंढते हैं. तो फिर मैं पर्सनली फॉर एग्जांपल पानी भी अब ऐप के थ्रू करता हूँ कि वो मुझे 1 घंटा में रिमाइंड करता है कि अब पानी पियो. So during our grandparents' time, like I used to notice, like, you know, most of my grandparents and all of that, they have like 7-8 brothers, 7-8 sisters, as much as the cricket team sometimes with substitutes, like so many siblings. And now we barely see people have children, 1 child, 2 child, and many times they're making a conscious choice, but sometimes it's like, you know, outside their choices, they're becoming infertile, whether it's a guy or whether it's a female. So in this episode, we're focusing more on female. So what are the reasons for infertility, and is it mostly a female problem or is it also equally split, or what is it like? So worldwide infertility, पहले हम ये बोलते हैं कि infertility बोलते किसको है. What is the definition of infertility? So if a couple is trying to have a baby with unprotected intercourse, without using any contraception for 1 year, and still not able to get pregnant, उसको हम infertility बोलते हैं. यानी कि अगर 6 महीने की ट्राई के बाद उसको infertility नहीं बोलेंगे. So 1 साल about, हाँ. 1 साल तक अगर आपने ट्राई किया और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, then we call it infertility. Now world wise infertility का जो इंसिडेंस है वो 10% है, बट लाइक जैसे आपने राइटली बोला, अब आजकल infertility का इंसिडेंस जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है. Coming to male and female are equal partners in the crime. So 40% फीमेल रीज़न होता है, 40% मेल होता है, 10% बोथ एंड 10% कॉज नॉट नोन. इसको हम इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी बोलते हैं, wherein because by doing any kind of possible test we are not able to find out what is the cause of infertility. So coming to क्यों ऐसा हो रहा है कि फीमेल में ऐसा. Let's first talk about female and little bit I want to talk about men also. So female में
ज़्यादातर आजकल जैसे हमने बोला PCOS इतना कॉमन हो गया है, तो इरेगुलर ओवुलेशन हुई, तो किसी को पता ही नहीं लगता कि 30 डेज में ओवुलेशन कब हुई, कब ट्राई करें, तो यही नहीं पता लगता है. समटाइम्स एन ओवुलेशन होती है कि ओवुलेशन हो ही नहीं रही है, इसको हम बोलते हैं एन ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी. How can you increase the ovulation, like the likelihood of ovulating? फॉलोइंग अ गुड लाइफस्टाइल. फिर से हम वापस सब वहीं कुछ पे आ गए. lifestyle पे आ सब गया. कुछ लाइफस्टाइल पे. मैंने आपको बताया था बहुत आसान है, सिंपल हेल्दी रहना बहुत आसान है. सो कमिंग बैक, एनोवुलेशन का मेजर कारण लाइफस्टाइल, PCOS, ऑफ कोर्स थायराइड एंड बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, बट मेजरली इट इज़ लाइफस्टाइल. फिर एक और होता है जिसको हम आजकल बोलते हैं प्री मेच्योर मेनोपॉज. दिस इज़ वेरी सैड एक्चुअली. विमेन आर लूजिंग देयर एग्स फास्टर. तो हमारे पास 33-35 पे भी आती हैं लेडीज़ जिसमें मेनोपॉज हो गया. My God. Again, here, lifestyle is very important. Today, we are exposed to pollution, herbicides, pesticides in food, lot of processed packaged food. जैसे हमने simple dioxin और VOC की बात करी, किसी को नहीं पता वो इतने delicate eggs कैसे ख़त्म हो रहे हैं. But it's a real fact. Men and women both are losing their sperms and eggs very fast. Male infertility is also on rise, female infertility is also on rise. It's a fact, however shocking it may look. So, doctor, what is the best age for someone to get pregnant then? So, like, however shocking it might appear, the best age to have a baby is early 20s. Now, Early 20s. Early 20s. See, we have to understand today, because of so many societal reasons, academics, maybe you've not found the right partner, people are delaying their Yeah. childbearing. लेकिन human body is designed in such a way that the peak of fertility is in early 20s. In fact, जब हम investigations भी करते हैं तो जो age है, it is the single most important variable. Even if सब चीज़ ठीक है, तो भी with rising age, fertility declines exponentially. So, doctor, I've noticed that a lot of people are now opting for IVF. ये IVF होता क्या है and why are people opting in? Is it a good thing? या सो IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो का क्या मतलब होता है? शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करना. इन अ नॉर्मल केस इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. लेकिन अगर किसी को नेचुरल ट्राई करके नहीं हो रहा है, दवाइयों से नहीं हो रहा है, किसी की अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो हम उसको बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं. सो हम क्या करते हैं कि हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, वाइफ का एग लेते हैं, दोनों को बाहर एक लेबॉर्ट्री में मिलाते हैं. जब हमें लगता है कि इसमें एम्ब्रियो बन गया, फिर उस एम्ब्रियो को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके यूट्रस के अंदर डाल देते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड IVF. इट्स एज सिंपल एज दैट एंड इट्स अ वेरी it's a very effective technique for those couples who've been struggling to get pregnant. And in a good IVF center, about 60 to 70% success rate होती है. So it is very important कि अगर आपको लगता है because of some reason आप अभी बच्चा नहीं पैदा कर सकते, प्लीज़ टॉक टू द डॉक्टर. आजकल हमारे पास इतनी ऑप्शंस हैं, एग फ्रीजिंग हम लोग कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं 35 से पहले प्लान नहीं करना चाहती, तो वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क कि 35 तक पहुँचे आपके एग्स ही ख़त्म हो गए. यू नो, इट इज़ अ रियलिटी. सो एटलीस्ट हमारे पास एक बैकअप प्लान है. Okay. So these Doctor, are I'll talk about the backup plan, but मेरे को वो जानना है. आप बोले early 20s is the best age to get pregnant. yeah. But that is very shocking because, Yeah. you know, usually, like if you get married 1 or 2 years before your pregnancy, for example, that means you're trying to potentially get married when you're 20 or like 19. Yeah, it's a fact. See, देखिए, human body is designed like this. हम जब भगवान ने ह्यूमन बॉडी को बनाया था, उसने ये नहीं सोचा था कि लोग 30 साल पे शादी करेंगे, फिर करियर करेंगे, फिर MBA करेंगे, फिर किसी का गर्लफ्रेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी. So it was not in the scheme of, you know, God's plan. God's plan. ये तो हमने बनाया है ना. तो if we are, so what is the best age to have a baby? When you are ready for it. इसमें कोई डाउट नहीं है. Early 20s is when I'm talking of medical point. Medically, it's Medically, early 20s. Mentally, it can be later. Anything. So, I mean, let me reframe my answer. The best age to have a baby is when you are ready for it. But we should be aware of the biological limitations of our body. कि अगर हम सोचते हैं कि हम 30 साल तक या 40 साल तक बच्चा नहीं पैदा करेंगे, there's nothing wrong. Perfectly all right. But आप अपने लिए बैकअप प्लान सोच के रखिए
कि अगर मैं नहीं करूँगी क्या तब तक मेरी बॉडी मेरा साथ देगी. And what are the backup plans? So one backup plan is कि हम egg freezing करा के रखें. आजकल sperm freezing भी होती है by the way. Embryo freezing भी होती है कि हम अगर if we are sure husband wife we are sure of the partners तो हम sperm लेते हैं, egg लेते हैं, fertilize करके embryo को save करके रख देते हैं. Now whenever the couple wants to try to get pregnant, it is perfectly achievable. And आजकल तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का साथ लेना चाहिए. सो कमिंग बैक टू जैसे मैंने बताया एक एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी होती है. इन अदर फैक्टर होता है ट्यूबल इनफर्टिलिटी, मतलब यहाँ पे ट्यूब में ब्लॉक हो गया. Freezing को लेके I am very curious. So you're saying a woman or a man can potentially get the eggs or the sperm frozen, and then they can use that later at a later age to get pregnant. Yeah. And how does that work scientifically, or is it very expensive? Okay. Or how common So is it all? it's now gaining a lot of popularity. Now people are at least being inquisitive. वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब नहीं तो मैं क्या करूँ. So इसमें हम technically क्या करते हैं? We give drugs to a woman and we make ovary form or stimulate more than one egg. In a normal cycle क्या होता है? एक ही egg develop होता है. इसमें हम ovary को stimulate करते हैं so that the ovary forms multiple eggs, maybe 5, 6, 7, 8 eggs. जिस टाइम हमें लगता है अल्ट्रासाउंड में कि सारे एग्स अब मैच्योर हो गए तो हम एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिससे सारे एग्स सक आउट कर लेते हैं. इमीडिएटली दोज एग्स आर स्टोर्ड, इसको हम क्रायो प्रेजर्वेशन बोलते हैं. सो एट एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स these eggs can be frozen till eternity. Till eternity माने आप जब चाहें उन eggs को use कर सकते हैं. And like I said, आजकल हमारे पास embryo preservation भी है. तो हम जैसे हमने egg लिया उसी समय husband का sperm लेके fertilize करके अब हम embryo को freeze कर सकते हैं. तो embryo freezing की success rates better होती हैं. But suppose a female is now 50 and she has that frozen somewhere. So will that egg be then put inside her body, or how does it work? So there are multiple now, facets to this. 50 years pe, as it is, it's not a great age to have a baby because of multiple medical problems. Tab tak she might have diabetes, she might have hypertension. So it is not just the egg and sperm. मैं सबको ये बोलती हूँ, pregnancy is not just about egg and sperm. It's about creating the right conditions around that egg and sperm. So आपकी body भी तो healthy होनी चाहिए ना. अगर आपकी body healthy नहीं है तो egg और sperm का क्या करेंगे हम? But yes, technically, the eldest patient which I have delivered was 49. Wow. So it seems like from the way you're explaining it, I see कि next 5-10 साल में egg freezing for people will become very common, especially in the early 20s when they're more fertile. It should, because I would hate it in case a woman says, "Oh, I want to go for MBA, लेकिन मेरी family बोल रही है बच्चा पैदा कर लो." I mean that's not right. दोनों कर सकते हो. हाँ, दोनों कर सकते हो और MBA करने के बाद कर सकते हो. I mean XYZ academics आपका. So doctor, in case a couple wants to have a child, what can they potentially do? Maybe in terms I've heard about potentially some sexual positions being better, or is there anything they can do to potentially increase their likelihood of pregnancy? So all I can say is that all this talk is scientifically baseless. It is only that the sperm and egg should meet. आपको right days पे try करना है, आपको अपनी body healthy करनी है ताकि आपका sperm count अच्छा हो, आपका egg count अच्छा हो. Any particular sexual position, keeping a pillow, not keeping a pillow, up, down, इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता. People say, oh, I should lie down, I should not wash, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता. When the semen goes in, it quickly goes up, कोई फर्क नहीं पड़ता. It's just the timing of that contact matters, बस, nothing else matters. Got it. So it's just the timing and the female should be ovulating most Yes, likely, yes. and if that happens, then Now I get it that you're coming back to terms like ovulating. yeah, now I'm getting smarter. You're getting smarter. So doctor, I've also heard that when a woman is not ovulating,
then some women sometimes, or they get like, they don't use protection. Like they're like, oh, I'm not ovulating, so I'm pregnant. So is that something you're like, Very wrong. Very wrong. In case you don't want to have a baby, you must use a protection at all times. Theoretically, a woman can even get pregnant with an intercourse during periods. so doctor, we spoke a lot about periods, PCOS, infertility, fertility, pregnancy. Now I want to move down the ladder and talk about menopause, premenopause. You also, doctor, mentioned that now a lot of women are having early menopause. Yeah. So what are some of the reasons for early menopause, and what's the typical age of menopause? Okay. So as the And what does menopause mean, first of all, for someone who does not very, very basic, like a one-line description of it's what? as simple as that. Menses pause. Men pause. Menses, periods are also known as menses. Okay, I didn't know that. Huh. Acha, okay. Menstruation, Huh. you know this term? Yeah. Menstruation. So short form, menses. So when menses pause, it's menopause. Got it. Right? So periods जब बंद हो जाते हैं, so technical definition is when you don't get a period for 1 year consecutively, no period for 1 year, that's menopause. Now typically menopause has been traditionally said to have certain stages. For about 4 or 5 years before a woman goes into menopause, the periods could be irregular. So Abhi, I was telling you, the cycles could be anovulatory, when she is not ovulating occasionally, right? So 4-5 साल पहले से periods they tend to become irregular. वो कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी जल्दी आते हैं, कभी late आते हैं. So this is known as perimenopause or premenopause. फिर उसके बाद menopause हो जाएगा when you don't get a period for 1 year. And after that, now the woman is in post-menopausal stage forever. Typically, the age of menopause is anything after 45. In case it's happening between 40 to 45, we say that it is early menopause. Anything which is before 40, we say it's premature menopause. Just like there's taboo associated with women getting periods in the first place, there's taboos around menopause. So what are the myths and taboos around menopause? So first of all, in my opinion, menopause, it's a natural transition. The way a girl gets a period, the periods stop also. So we should not be scared of menopause. Nobody dies because of menopause. And if you take care of yourself, then menopause actually can be a very productive stage of life. It's actually time to reflect back how far I have come, how wise I have become. I've raised a family, I've been so successful in my career. So it's a time to actually be very, happy about your achievements. At the same time, this is a time when medically some changes happen in the body. So the first thing is that the periods become irregular, they finally stop. Some people experience little mood changes, some, they become angry, sleep issues, excessive irritability. But then not every irritability could have the reason of menopause. There could be multiple reasons for this. Women might tend to gain weight. Some people experience what is known as hot flashes, in that you suddenly radiate a lot of heat and warmth from your body. And this could be sometimes very difficult and very debilitating. कि suddenly आपको लगेगा बहुत गर्मी आ रही है, बहुत पसीने हो रहे हैं, and then it becomes all right also. There are 2 specific medical things which every woman must be aware about. So we have to understand ये जो estrogen hormone होता है, जो यहाँ से ovary से निकलता है, it gives very good cardio protection to a woman. The rates of cardiovascular accidents or heart attacks in a simple way are much lesser in premenopausal women who've not achieved menopause, because estrogen has a cardioprotective effect. It protects the heart. Okay? तो जिनको मेनोपॉज नहीं होता है उनका हार्ट अटैक होने का रेट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेन. बट आफ्टर मेनोपॉज दिस रिस्क बिकम्स इक्वल इन बोथ मेन एंड वुमेन. क्योंकि एस्ट्रोजन हट जाता है, क्योंकि अब एस्ट्रोजन कम हो गया बॉडी में या खत्म हो गया. सेकेंड थिंग इज मेनोपॉज आने के बाद जो बोन डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है.
So हमारी जो bones की जो growth होती है ना women, it is once again dependent on the estrogen. So the chances of osteoporosis का मतलब क्या होता है? The bones become brittle, खोखली हो जाती हैं. So they tend to have more fractures. So doctor, we spoke about right from early period to PCOS to sexually active to infertility, fertility, menopause, premenopause, postmenopause. Now we spoke a lot about what a woman can do for her own health. Now my last question to you is, what can a man do for a woman's health? So the single answer would be, single line answer, that be on her side when she needs you. We have to understand, he has to understand that woman's body is unique. It undergoes so many changes from puberty to pregnancy to breastfeeding and menopause. Her needs are unique. Her needs are special. So the least a man can do is to be on her side when she needs him the most. Thank you so much, doctor. That was great. It was pleasure being here on your show and wishing you all the best. Thank you. To be honest, I'm quite embarrassed that as a man, I know so little about women's health. I strongly believe that men should take more focus on women's health rather than treating it only as a woman's problem. And women should also focus more on men's health rather than treating it only as a man's problem. Women's health cannot be entirely covered in only one episode, but there were quite a few interesting learnings. Some of today's best takeaways are that menstrual cups are the best if you're comfortable using them, since they create the least amount of waste. Secondly, that if you don't want a baby, use protection, period. Even when you're on your period, because everyone's cycle is different. You can have a baby whenever you want, but it's important to have a plan, even if you're not planning for one until later. And men, learning about periods and being supportive towards women around us is the best thing that we can do. Don't be awkward and don't make your partner feel awkward. Women's bodies are more complex, and while we may never fully understand it, the best thing that we can do is to show up for the women around us in whatever way they need us. And lastly, for the society, breaking of the hymen does not mean losing virginity.